as you all know, I've been traveling. If you've been checking my stories on my Instagram handle, Pooja MIA, my drug underscore, which is now verified, thanks to only my own hard work. I'm not going to give credit to anybody. Yes, I'm grateful, but it's my own hard work of so many years which I've been denied, delayed, wasted. Out of my way, enough. So I need to tell you about what's been going on. So from the past 4 days, I've been cleaning the attic of my room. And, I've just been really, really tired, hardly getting any sleep. I've got so many clothes. That's how they used to break into Windsor because my mother had left the keys with me and Dood. Poonam and Sonakshi used to come and plant their ass and steal my clothes and my watches because I'm a glamorous girl. I've got a huge wardrobe. One room just occupies my clothes, my wigs, my shoes, my accessories. So, you want to steal? You don't want to pay? Go get a stylist, you fucking freeloaders. Enough. Where's the money for the watch you stole, which I got from Singapore? Where are my 1,000 US dollars, you fucking cunt? So anyway, so I was just busy, reassembling my wardrobe and everything. And last night I probably might have gone to sleep at, say, 3 or 4 in the morning. And I had a morning flight today. So I hardly slept for 3 hours. My mother was being kind. She helped me pack my bags and everything because I was obviously, I had excess baggage. And then when I was supposed to be leaving home, I said, हाँ, सलमान खान का नाम लेके कौन मुझसे अब पैसे लूटेगा? अकेली लड़की देख के. So suddenly my mother lost her mind, okay? I told her that, please give me your phone. I need to book a cab because, my phone is hacked by Malaika Arora's gone. So she won't let me book a cab because she gets pleasure seeing me roam around in rickshaws. She's the same blood-sucking cunt who keeps on annoying me day in, day out. Oh, by the way, remember the black gloves that I wore at Lakme India Fashion Week? Those opera lycra gloves up until my elbows with that black gown, which created so much of ruckus that people were made to ape it. So I've been searching for those gloves along with the bikinis from the past 4 days, but I can't find it anywhere in that haunted house, okay, where I'm being watched by the sinners and I'm being controlled by Malaika through the phone, okay? So I could not find the gloves anywhere and I was really frustrated because, I don't have an AC in the attic and it was so hot and my back was hurting, bending. My back starts hurting now, right? So in any case, I told my mother I want to book a cab from your phone. So she's not opening the phone. She's not putting in the password. So then the driver came to take my brother to work because my brother roams around in a 45 lakh Pajero. But Pooja Mishra has to travel in a rickshaw. That's the equation my mother has set between my brother and me because he earns and I don't. So you see, even in my own family, only those people are respected who earn. So who are the people who are stopping me from earn? I'm here to finish them, okay? Because it is just fucking up my equation with the whole outer world. This financial crunch that I'm being forced with. So, she didn't book me a cab. So Abrar came, our driver. I told him, take me till the main gate. As you know, I live in the bungalow, which is 1 kilometer inside from main gate. So he took me in the Pajero to the main gate. He dropped me off at the rickshaw stand. And I had some 4 bags, okay? 4 bags. And with those 4 the airport. And it's raining and it's messy. Who cares? Pooja Mishra, after slogging for 18 years, after 30 to 35 movies of hers being stolen by Malaika Arora through the hack phone and given to Salman Khan's girlfriend because she was so insecure I'll become a bigger star than her, after Sonakshi Sinha and her father have sat their ass down on my head for 18 years and hypnotized me to come across as psychotic and fuck my relationship with the rest of the Bollywood people who wanted to hire me as a main lead actor bigger than Sonakshi Sinha. So, after I've been exploited in every area of my life for 18 years, I'm being made to travel in rickshaws. How do I feel? Oh, I feel so fucking fabulous. That at this age, when I should have a fleet of luxury cars, I'm roaming around in a rickshaw because I've just been used as a vehicle to make Malaika and Sonakshi rich. You see, I'm just something that is to be used, abused, and thrown out of the window, right? So,
I've been like doing a lot of interior shopping on Instagram. So I came across this handle where, they take down broken furniture and recycle it and reconstruct it. So I spoke to them, they're Pune based. So I said, do you have somebody who can do this for me in Goa? So they said, yeah, contact Nasir. So I took it as a screenshot because I was so busy packing. I was packing till fucking 1 hour before my flight. So I said, okay, I just took a screenshot. And today at the airport, I wanted to call up that Nasir and his number has vanished from the phone. Isn't it similar to the Cannes incident where I was invited for the Viva Awards, but I was denied because the person who's hacked my phone is eating up my opportunities? One worse than the other. Hear more. And then I went to the smoking room and I was smoking a cigarette and I met this DJ. So I said, what do you do? He's like, I'm a DJ. I'm off to Udaipur for a show. And that just rang a bell that they might try another rape conspiracy, So I immediately posted, if Udaipur is repeated here again, freeloading, drugging, raping, robbing jewelry, I will fucking whack you. Okay, enough of freeloading. So I said all that and finally my flight arrived. It was super delayed because of the monsoons. So when I sat in my flight, my brother had booked my ticket, so he'd booked me a meal. So I told him that, she said, are you a veg or non-veg? I said, I'm a non-veg. She said, no, but we've got only vegetarian sandwich for you. I said, why? I'm a non-veg. No, we serve only vegetarian. Okay, so they're trying to hint. Because I put up that Udaipur story on my Instagram. Okay. I just ignored and I ate vegetarian. I like vegetarian too. I don't even eat sandwich, but today I ate because I'm traveling. 2 days I haven't gone to the gym and I'm eating shit. I feel so guilty already. Then there's a woman sitting behind me, a mother with a kid on her lap. You know what did she say? We'll sleep. It just rang such a big bell in my head. Because I put up that Udaipur post, they're trying to give me a vegetarian sandwich, trying to say that, oh, now you're not going to eat, have sex. And then the woman behind me, the mother, the freeloading cunt who I'm going to tear into so many pieces that she won't be able to put herself together again, is telling her kid, oh, we'll sleep. Yeah, we'll sleep. So that's Sonakshi Sinha's bhosada is filled with crows and is starred everywhere as a main lead in Bansali, Farhan Akhtar and whatnot. Touch me! And I'll show you who's the boss! You fucking freeloading parasites! What have you done for me, huh? What have you done for me? Absolutely nothing. Just freeloaded off you, darling. Why? Talking of freeloading, let's re-narrate the Roy Fernandez incident. Who's the person who keeps on listening? Phone, Malaika Arora. She's the one who planted Roy Fernandez outside local gastro to hoodwink me because she heard me talking to my contractor Ramesh that, I'm looking for some help in Goa. I want to go and renovate my apartments. So she planted a servant who's kissing me, who's putting wine from his mouth into mine. Me, a fucking international diva, daughter of Chief Commissioner of Income Tax who doesn't even let fucking fly sit on her body. A fucking servant who wants 5,000 rupees a month. Why? Because Poonam, Sonakshi and Malaika should only hang around with the rich cocks. You see, Pooja Mishra will only get servants. Another thing, you want to do interiors? Do it yourself. Why do it yourself? What about the crows you made stealing my movies? Because A is J. Who's this A? The same fucking Randi behind? We'll sleep. You go and sleep. Try and touch me. And I'll tear you to pieces, you fucking cunt! You fucking cunt! So, is J, that's why do it yourself. So if I don't fucking ram this A and ram the Bhosadi wala who says do it yourself, I'm not Pooja Mishra, the real diva. Amma is A. Amma? You want to be Shah Rukh Khan today? Tomorrow you can be Hrithik. Day after you can be Shahid. Why, Amma? Why do I have to travel in rickshaw after 18 years of serving your cunt and your lender Salman Khan's dick? Why do I have to lead such a bad life? You fucking Randi, Amma! Amma Randi hai! Amma एक रंडी है! वो वर्जिन चूतों को चुदवाती है अपनी बेटी को स्टार बनाने के लिए और अपनी गाड़ में करोड़ भरने के लिए!
मेरी ऐश का है, मेरी दुनिया भर की सैर का है, मेरे करोड़ का है, मेरी फ्लीट ऑफ लग्जरी कार्स का है, मेरा ड्रीम हाउस का है, वो सब तो तूने अपनी कुतिया के मुंह में घुसेड़ रखा ना लाड़ी। तो मेरी अम्मा बनने आना भी मत, इतने जूते मारूंगी दिमाग ठिकाने लगा दूंगी, समझी। एंड देन अनदर थिंग दैट हैपेंड, लेट्स टॉक अबाउट द चाइनीज मिलिट्री चीफ, the Chinese military chief who doesn't allow any photos, who doesn't allow no photos allowed, only fake defense allowed. The same Chinese military chief who came and sat on my head and did hypnosis on me the night I was supposed, the morning I was supposed to be going, February 2012, I still remember the month and the year. The Chinese military chief is going to do my defense? Really? You fucking piece of dung! Kept me anonymous and hidden for so long. You're going to do my defense? I'll kick you so hard on your face. I'll break your face. Made me fart. Sucked my energy because he was so insecure. I'm shooting with Salman Khan. कहीं सलमान खान मेरे को अपनी पिक्चर में हीरोइन मेन लीड इसकी कुतिया से ज्यादा बड़ा रोल ना दे दे। क्यों रे रंडे मदरचोद? बताओ कभी असली जात? खोखला, घिनौना, फेक बास्टर्ड। मेरे पास और मेरे को डिफेंड करने की कोशिश भी मत करना। तोड़ के कचूमर बना के चूरमा बना दूंगी तुम सालों सबकी हड्डियों का। जिस तरीके से तुम लोग ने मेरे को हर डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ में एक्सप्लॉइट किया है, पूरी दुनिया को दहाड़ दाड़ के बताऊंगी। अपनी इनसिक्योरिटीज और जलन को शांत करने के लिए पूजा मिश्रा को नौकर बनाया गया, जब वो तुझसे ज्यादा बड़ी महारानी है मादरचोद। उसी ने उसके बाप को मार डाला, जिसे पैसे ना मिले, हर जगह नाक रगड़ती भीख मांगती घूमे 1,000 के लिए, जब उसकी चूत को चुदवा के हम करोड़ गिनने से थकते नहीं। क्यों रे लाड़ी पूनम? बोल रे अम्मा, फाड़ू तेरा भागड़ा तेरे लंड का। फेक मिलिट्री चीफ मेरा डिफेंस करेगा, तेरे मुंह पे थूक दूंगी। रंडे मादरचोद, 18 साल मैंने कांचे नहीं खेले हैं, सब समझ आ रहा है मुझे। I'm understanding everything that you've done to me, okay? So don't try your fake stunts with me. गांड में ऐसी सुलग मची है कि पुणे में कैमरा लगा रखे हैं। 11 मॉड्यूल करो, 5 बजे सुबह तक गांड घिसते रहो, 4 दिन तक आके गांड घिसते रहो, और करोड़ माल और लाइफस्टाइल हमारी, बस मजदूरी तुम्हारी। My mother didn't give me the keys to my house and you know that? ऐसी हिप्नोसिस की है शत्रुघ्न ने और सोनाक्षी ने मेरी मदर के ब्रेन पे। शी इज नॉट गिविंग मी द कीज टू द अपार्टमेंट। माय ब्रदर इज सेइंग आई वोंट लेट हर गो देयर। व्हाई? इट्स नॉट योर अपार्टमेंट, यू डिडंट स्पेंड अ पेनी फॉर इट, माय फादर डिड, and if my father was alive he would give me the keys. So you don't fucking tell me what to do. You've already hidden the keys of my Windsor apartment, try hiding the keys of my Goa apartment. ऐसा फाड़ूंगी ना तुम मदर चोदो दोगले कीड़ों को, मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ूंगी। 18 साल बीतने को आए, डू इट योरसेल्फ, और तेरी कुतिया की मूत की जलन कंट्रोल में, वरना इतनी हाथ मारूंगी ना। 18 साल में जो जो डेली मेरे को टॉर्चर किया है, दाड़ दाड़ के पूरी दुनिया को बताऊंगी, फिर देखूंगी तेरी कुतिया की भोसड़ी कैसे बेच पाती है तू। अच्छा, ये एमिली, ये रमेश जो मेरा कॉन्ट्रैक्टर है, इसने मेरे को एक टैरो कार्ड रीडर कॉल्ड एमिली से कनेक्ट किया, जो बड़ी उतावली हो रही थी मुझसे बात करने के लिए। जस्ट लाइक द पीपल सोनाक्षी सिन्हा प्लांट्स इन माय लाइफ, बीट स्नेहा, बीट एमिली। देन शी सेइंग तुम मंत्र पढ़ो, तुम में किसी ने जिन डाल रखा है, तुम गायत्री मंत्र पढ़ो, गायत्री कवच पढ़ो, ये वो, ठीक है। 2-3 दिन मैंने सुना उसे, उसने बोला सुना करो while making my breakfast, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर when I posted that somebody cropped my cleavage, remember when I'd gone out partying at Escada, that they cropped my cleavage in the close-up, तो मेरे को मैसेज भेजी शत्रुघ्न ने किया है, जब किया था मलाइका ने, ओके। तो ऐसे हमेशा इस कुतिया ने सलमान खान के परिवार के अपने गांडे चेचक लंड बाप के नाम पे लिए हैं, उनके साथ ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए। ये है सोनाक्षी सिन्हा का खेल, जिसे मैं तोड़ चुकी हूँ। रमेश बोल रहा था आप गोवा आ रहे, आप एमिली के साथ रहो। मैंने कहा मैं बारिश में रोड पे सो लूंगी, पर मैं ऐसी रंडे कुतिया के साथ नहीं सोऊंगी जिसने मेरे अकेलेपन और मेरी इनोसेंस का एक मजाक बना रखा 18 साल से। क्यों कुतिया? सलमान खान का नाम मैं अपनी जुबान पे लेती हूँ तो तेरे भौसड़ में जलन मचती है? वो तेरा एटीएम कार्ड है ना,
जिससे करोड़ों तू अपनी गाड़ में दबाए बैठी है, मेरी मेरी ड्रीम्स को अपनी रियलिटी बना के बैठी है। क्यों रे लौड़ी मेरे साथ ब्राउनी पॉइंट स्कोर करेगी? चल मेरे 18 साल वापस दे दे, मेरे 18 साल की ऐश, मेरे 18 साल की जिंदगी, मेरे बाप की जिंदगी जो तू और तेरा बाप और तेरी रंडी माँ खा गए, सब वापस कर। तब तुझ पे थूकूंगी भी, वरना मुझसे आंख मिलाने की भी जुर्रत मत करना। जो ये डीएम्स भेज रही है कि मैंने पूजा मिश्रा बिग बॉस को मैसेज भेजा, वो पूजा को परेशान करी, सडनली तू मेरी डिफेंस में आ रही है। क्यों? गाड़ फटने वाली है इसलिए? दुनिया को तेरी असलियत पता चलने वाली है इसलिए कि कैसे तूने और तेरे रंडे परिवार ने मेरे खोपड़े पे बैठ के मेरी जान ली है। 18 साल सब कुछ खा गए, कुछ नहीं छोड़ा। अभी भी गाड़ में घुसे हुए फ्लोरिडा स्टेट में जो भीख में बंगला पाया है चिल्लर में मेरे बाप की वजह से, उसे तो मार डाला ना। यह तुम्हारी असली जात। इतने ग्रीडी हो तुम लोग पैसे, फेम और पावर के लिए कि उन्हीं लोगों को मार डालते हो जो तुम्हारी मदद करते हैं, जिन्होंने, मैं तो बस 2 चीजें जानती हूँ कि 1.5 लाख का बिल भरा था इस कुतिया की रंडी माँ का, और इसके बाप को 100 करोड़ की स्पॉन्सरशिप दिलाई थी एक कॉल से। ये तो मैं एक बात बस जानती हूँ, 2 बात बस जानती हूँ। मेरे पापा इसके रंडे परिवार से रोज बात करते थे। रोज ये लोग मेरे बाप की चेयर को मिल्क करते थे, दोहते थे, माल कमाने के लिए, कॉन्टैक्ट पाने के लिए। क्यों? और मार डाला ना अंत में भोसड़ियों। और मैं तुम्हारी ग्रेटफुल रहूं। तुम्हारे ये जो खिलवाड़ इन्होंने हिप्नोटाइज और काला जादू करके किया मेरे साथ 18 साल, पूरी दुनिया आके मुझे बोलती है सोनाक्षी सिन्हा आपसे बहुत खेलती है। ये शत्रुघ्न सिन्हा आपके साथ बहुत खेलता है, इनकी गांड से चवन्नी नहीं गिरेगी। मेरी माँ का दिमाग ऐसा फेरा हुआ, मुझे 1000 रुपए दे रही है। मेरी उम्र क्या है? 15 साल के बच्चे का पॉकेट मनी भी 5000 होता है। मेरे बाप को क्यों मारा? क्योंकि मुझे लाखों लाख देता था। मेरे को रोड पे लाके भिखारी बनाना था इन्हें। जो मुफ्त में चुदवाई करवाई ना, फाड़ फाड़ूंगी ना रंडी भोसड़ी वाली। रोज लाइव पे आके बताऊंगी कैसे तूने मुझे चुदवाया अपनी बेटी को स्टार बनाने के लिए, कैसे तूने मुझे चुदवाया नारंग से काली BMW पाने के लिए, कैसे तूने वीएन धूत के साथ चुदवाया शाहरुख खान की पिक्चरों में सोनाक्षी का भोसड़ा डालने के लिए। चाहे वो इत्तेफाक हो, वेलकम टू न्यूयॉर्क हो, कलंक हो, सबको मिली ना एक जोर की बात बॉक्स ऑफिस में, क्योंकि मेरी नाबालिग चूत को तूने इस्तेमाल किया वहां तक पहुंचने के लिए। क्यों रे लाड़ी लाड़ बाल कुतिया मादर चौधनी बंसाली की पिक्चर में अपनी लौड़ी जो मेरी गाड़ की पाद है, मेरी गाड़ की पाद बंसाली की पिक्चर में फीचर करने वाली है। हा 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 हा। मेरी गाड़ की पाद रंडी मादर चौध।